आज की इस वीडियो में हम वैलिडिटी ऑफ द असेसमेंट टूल्स के हवाले से पढ़ेंगे। असेसमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज़ ऑब्टेन्ड relative to some non-objective or goal। असेसमेंट एक तरीकाकार है जिससे हम मालूमात इकट्ठी करते हैं relative to some non-objective or goal, किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए। Assessment is a broad term that includes measurement। असेसमेंट एक वसी इस्तिलाह है जिसमें मेजरमेंट आ जाती है, पमेश, टेस्टिंग एंड वैल्यूइंग द वर्क। मोस्ट ऑफ टाइम्स द टीचर यूज असेसमेंट टू टेक द एजुकेशनल डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ज़्यादातर टीचर्स जो टेस्ट लेते हैं यूज असेसमेंट जायज़ा लेते हैं टू मेक द एजुकेशनल डिसीजन, तालीमी फैसले करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, इन टेस्टों की बुनियाद पे। इफ़ वी डिज़ायर टू अनकवर द ट्रूथ, अगर हम सच्चाई का सामना नहीं करते अबाउट द एजुकेशनल एडवांसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, तलबा की तालीमी तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए वी फोकस ऑन द असेसमेंट प्रोसीजर्स, हम जो है वो तवज्जो मरकूज़ करते हैं असेसमेंट प्रोसीजर्स पे, जायज़ा के तरीक़ाकार पे, एंड द फाइनल असेसमेंट मेड बाय टीचर्स, और जो आखिरी जायज़ा है वो उस्ताद लेते हैं बोथ ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, इंस्ट्रक्शनल तरीक़ाकार से हिदायत की सूरत में, एंड एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, और फिर इंस्ट्रक्शन के अख्ताम पे। Therefore, it is necessary to make the valid and reliable assessments। इसलिए ये ज़रूरी है कि असेसमेंट जो है वो वैलिड हो और रिलायबल हो। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, सीखने और सिखाने का जो तरीका है, इसके पहले और इसके दौरान। अकॉर्डिंग टू Boud 1995, students may with difficulty escape from the effects of poor teaching। According to Boud, students may escape from the students जो है वो बच सकते हैं from the effects of poor teaching के असरात से, but they cannot escape the effects of poor assessment। लेकिन वो पुअर असेसमेंट के असरात से नहीं बच सकते। दिस हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग आउट असेसमेंट। ये इस चीज़ की वजाहत करता है, इस चीज़ को नुमायाँ करता है कि असेसमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ, तलबा के साथ उनका सही तरीक़ाकार क्या है। राउंड in 1987 states that assessment procedures offer answers to the following questions। assessment procedures जो हैं वो जवाब देते हैं to the following question, दर्ज सवालात का। what student qualities and achievements are actively valued and divided by the system? how are its purposes and intentions released? Two major purposes of the assessment has been identified by the experts of measurement। The first is to assist learning, जो पहला है वो learning के हवाले से है, and second to determine the effectiveness of the educational process। That this can only be achieved when the teachers are sure about the tools, for example tests they use for the assessment, that tests are valid and reliable। When a teacher or instructor has to choose among the two or more tests, जब किसी इंस्ट्रक्टर को या फिर टीचर को दो या दो से ज़्यादा टेस्टों में से कोई चूज़ करना हो, पिकअप करना हो, all of which available from the well reputable sources, उनमें से जितने भी दो या दो से ज़्यादा टेस्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं फ्राम दी वेल रेप्यूटेबल सोर्सेस, अच्छे रिसोर्सेज से, अच्छे ज़राए से वो टेस्ट बनाए गए हैं। इट इम्पोज सम डिफ़िकल्टी फॉर द टीचर और इंस्ट्रक्टर, तो ये
तो ये कुछ मुश्किलात का बहस बनता है टीचर या इंस्ट्रक्टर का। देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू चेक द लोकल कंडीशंस। फिर मकामी हालात का जायज़ा लिया जाता है। एंटी कंटेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस को देखा जाता है, रियात को देखा जाता है। डैट विच वन इज़ क्लोजली अलाइंड विद द कंटेंट। इन टेस्टों में से कौन सा कंटेंट के लिहाज से मिलता जुलता है, कंटेंट्स के लिहाज से कौन सा करीब है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, वी कैन से डैट वी हैव टू फोकस अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स। दूसरी तरफ हमें ऑब्जेक्टिव, मकासद जो हैं इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस के, उस पे तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। द अलाइनमेंट ऑफ टेस्ट आइटम्स विद द लर्निंग आउटकम्स। जो अलाइनमेंट है टेस्ट आइटम्स की लर्निंग आउटकम्स के हवाले से। बेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द असेसमेंट टूल्स इज कॉल्ड द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। In order to assure the validity, we must ask these questions. हमें ये सवालात पूछने चाहिए टू मेक श्योर, इस बात की यकीन दहानी के लिए, डेट आवर असेसमेंट मैचेस आवर एजुकेशनल पर्पसेस, कि हमारे जो असेसमेंट है, हमारा जो जायज़ा है, वो एजुकेशनल तालीमी मकासद से मिलता है। एज ए टीचर वी शुड फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट असेसमेंट। बतौर उस्ताद हमें सबसे अप्रोप्रिएट असेसमेंट का तरीक़ाकार जो है वो अपनाना चाहिए। मुनासिब जो तरीक़ाकार है जायज़ा लेने के लिए, वो अपनाना चाहिए। द डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स, ताकि जो मतलूब हैं तलीमी आउटकम्स, वो हम हासिल कर सकें। When considering the assessment task, we should consider the strength and weaknesses of the test item. जब हम असेसमेंट को कंसिडर करते हैं तो हमें उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, उसकी खूबियाँ और खामियाँ देखनी पड़ती हैं। एंड अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द टेस्ट, और उन टेस्ट की जो अरेंजमेंट है उसको भी देखा जाता है, तरतीब को भी देखा जाता है। द रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट टूल्स, जो असेसमेंट टूल्स की रिलायबिलिटी है, डेट रेफर टू द कंसिस्टेंसी। हियर इन दिस यूनिट the prime concentration is the validity, which may be referred as the credibility of the assessment tool. Therefore, different definitions of validity, method of assuring validity of assessment tools, and the factors affecting the validity of the assessment tools. Nature of validity. The validity of an assessment tool is the degree. वैलिडिटी जो है किसी भी असेसमेंट टूल की, वो डिग्री है, वो सतह है, टू विच, जहाँ तक इट मेजर्स फॉर व्हाट इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर, कि इसको जो बनाया गया है वो उसको किस मकसद के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए टेस्ट इज डिज़ाइन टू मेजर द स्किल ऑफ एडिशन ऑफ 3 डिजिट। मिसाल के तौर पर एक टेस्ट बनाया गया है जिसमें आपने 3 डिजिट एडिशन को देखना है। 3 डिजिट जो है सह हिंसी जमा करनी है, इस महारत को आपने देखना है मैथमेटिक्स, रियाजी में। बट द प्रॉब्लम्स आर प्रेजेंटेड इन डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रेजेंटेड किए गए हैं, पेश किए गए इन डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, मुश्किल लैंग्वेज में। दैट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू एबिलिटी लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, जो कि स्टूडेंट्स की एबिलिटी लेवल तक नहीं है। Then it may not measure the addition skill, तो फिर इस एडिशन स्किल measure नहीं हो सकते अब 3 डिजिट तक। Consequently will not be valid test, तो ये फिर valid test नहीं होगा। Many experts of measurement had defined this term. Some of the definitions are given as under. चंद एक तारीफें नीचे दी गई हैं। According to Business Dictionary, the validity is the degree to which an instrument, selection process, statistical technique, or test measures what it is supposed to measure. Koch and Campbell, 1979, define validity as the appropriateness or correctness of inferences, decisions, and descriptions made about individuals, groups, or institutions from test results.
According to APA, American Psychological Association standards document, the validity is the most important consideration in test evaluation. The concept refers to appropriateness, meaningfulness, and usefulness of the scientific inferences made from test scores. Test validation is the process of accumulating evidence to support such inferences. Validity, however, is a unitary concept, although evidence may be accumulated in many ways. Validity always refers to the degree to which that evidence supports the inferences that are made from the scores. The inferences regarding specific uses of a test are validated, not the test itself. Howell's 1992 view of validity of the test is a valid test must measure specifically what is intended to measure. एक valid test जो है वो होता है जिसमें जो चीज़ measure की जा रही होती है उसी के मुताबिक हो. According to Messick, the validity is a matter of degree, not absolutely valid or absolutely invalid. He advocates that over time, validity evidence will continue to gather, either enhancing or contradicting previous findings. Overall, we can say that in terms of assessment, validity refers to the extent to which a test content of representative of actual skills learned and whatever the test can allow accurate conclusions concerning achievement. Therefore, validity is the extent to which a test measures what it claims to measure. It is vital for a test, ये बहुत अहम है टेस्ट के लिए, to be valid in order for the results to be accurately applied and interpreted. Let us consider the following examples. Say you are assigned to observe the effect of strict attendance policies on classroom participation. You are assigned, आपको कहा गया है कि आपने ऑब्जर्व करने हैं इफेक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसीज, हाज़िरी की जो पॉलिसी, अटेंडेंस पॉलिसी जो है क्लासरूम में हाज़िरी की, उस पर क्या इफेक्ट है. आफ्टर ऑब्जर्विंग 2 or 3 weeks, 2 या 3 हफ्ते देखने के बाद, यू रिपोर्टेड दैट क्लास पार्टिसिपेशन डिड इंक्रीज आफ्टर पॉलिसी वाज एस्टैब्लिश्ड. तो आप देखेंगे कि जो क्लास की पार्टिसिपेशन है, अटेंडेंस है, वो इंक्रीज हो जाएगी इस पॉलिसी के लागू होने के बाद. से यू आर अटेंडेड टू मेजर द इंटेलिजेंस, आपको कहा गया है कि आपने जहानत देखनी है. एंड इफ मैथ एंड वोकेबलरी ट्रूली represent intelligence, then a math and vocabulary test might be said to have high validity when used as a measure of intelligence. A test has validity evidence if we can demonstrate that it measures what it says to measure. For instance, if it is supposed to be a test for 5th grade arithmetic ability, it should measure 5th grade arithmetic ability, not the reading ability. Test validity and test validation, इन दोनों में क्या फ़र्क है. Test can take the form of written responses to series of questions. Test जो है उसमें हम तहरीरी जवाबात की सूरत में लेते हैं to a series of questions, कुछ सवालात का, such as the paper and pencil test, जैसा कि पेपर और पेंसिल टेस्ट है, और of judgments by experts about the behavior in classroom school, या फिर एक्सपर्ट्स के जो जजमेंट्स होते हैं, जो फैसले होते हैं अबाउट बिहेवियर, रवैये के बारे में, इन द क्लासरूम के अंदर या फिर स्कूल में, और फॉर ए वर्क परफॉर्मेंस, या फिर काम की कारकर्दगी अप्रेजल. द फॉर्म ऑफ रिटन टेस्ट रिजल्ट्स आल्सो वेरी फ्रॉम पास फेल टू होलिस्टिक जजमेंट्स. जो रिजल्ट्स हैं टेस्ट के, रिटन टेस्ट के जो रिज़ल्ट हैं वो भी
वेरी करते हैं फ्रॉम पास फेल से होलिस्टिक जजमेंट्स तक टू ए कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ नंबर। इसमें नंबर्स भी आ जाते हैं, पेचीदा सीरीज ऑफ नंबर भी आ जाते हैं, मीन टू कन्वे minute differences in behavior regardless of the form a test takes। इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए कि एक टेस्ट जो है वो किस सूरत में लिया गया है, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज हाउ द रिजल्ट्स आर यूज्ड, के रिजल्ट किस तरह इस्तेमाल किए गए हैं, एंड द वे दोज रिजल्ट्स इम्पैक्ट इंडिविजुअल पर्सन्स एंड सोसाइटी एज ए होल। Tests used for admission to schools or program or for educational diagnosis not only affect individuals but also assign value to the content being tested। A test that is perfectly appropriate एक टेस्ट जो है जो कि मुकम्मल तौर पे मुनासिब है एंड यूज़फुल इन वन सिचुएशन और किसी ख़ास सिचुएशन के लिए मुफीद है, मे बी inappropriate or insufficient in another, वो किसी दूसरी सिचुएशन में गैर मुनासिब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए टेस्ट दैट मे बी sufficient for use in educational diagnosis may be completely insufficient for use in determining graduation from high level। Test validity or the validation of a test explicitly means validating the use of a test in a specific context, such as college admission or placement into course। Therefore, when determining the validity of a test, it is important to study, ये अहम है, to study मुताला करना the test results in the setting in which they are used। In the previous example, in order to use of same test, एक ही टेस्ट इस्तेमाल किया जाए for educational diagnosis as for high school graduation, each use would need to be validated separately even though the same test is used for both